SC category. BJP MPs belonging to the SC/ST category have met with the Prime Minister and they have handed over a memorandum against the Supreme Court SC/ST observation, especially on that creamy layer and further categorization. So that's the latest with these MPs now, handing over this MOU to the Prime Minister and also expressing their concerns, their grievances over the fact that the states will have to identify the creamy layer in SC/STs and exclude them from quota benefits. That's something that has not really gone down with some very influential voices in the SC/ST community. Payal joins us now for the very latest. Payal, just tell us a little bit more about this MOU that has been handed over to the Prime Minister and the interaction that the MPs have had with the PM. Well, of course, the Prime Minister, in fact, wanted to hear from the SC/ST MPs who wanted to speak to him about this issue, which was creating a lot of confusion, in the minds of the people, especially their voters. So, many MPs, approached the Prime Minister's office separately. That's the reason the Prime Minister decided to meet the SC and SC MPs from the entire party, today in Parliament. In fact, he spoke about them. He wanted to hear from them what really the concern was. However, a memorandum was handed over to the Prime Minister with the concerns. And they were basically of the opinion that this is going to create a lot of confusion, in the minds of the people. To which the Prime Minister said to have told these MPs that this is a personal observation of a certain number of judges within the Punjab High Court, is what we are given to understand. And this does not in any way signify the position of the Government of India. The Government of India is not going to be, yielding to any of this, which is going to come out and show that the government is anti SC/ST. The reservation, the way it is, will remain the same way it is. That is the communication that the Prime Minister, in fact, made with these MPs. So he wanted to clarify and clear the air because, remember, you saw what happened in the 2024 elections, Avantika. When the opposition tried to create a narrative saying that, if they come to power, they will change the constitution. That actually caused the BJP a big deal, given the fact that the party lost a lot of seats within the SC/ST belt, and the Dalit population also, deserted the BJP's vote bank in a big way, which actually caused them a number of seats in the 2024 elections. So obviously, the Prime Minister really said that, they don't want to comment on the judgment of any court or whatever, but, the central government at their level, they would not want to tinker with any existing policy which really remained as far as the SC/ST case was really concerned. Okay, Payal, thank you so much for joining us. In fact, Payal got a chance to catch up with BJP MP Bhola Singh on this matter. Let's listen in. बीजेपी एमपी भोला सिंह जॉइंस अस। भोला जी, आज ऐसी क्या बात हुई आपके बीच में? आपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था, क्या है पूरा मामला? एक डेलीगेशन SC और ST के माननीय सांसद का राज्यसभा और लोकसभा के सभी प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात की है। और जो मुलाकात का विषय था, जिस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन को SC के लिए कुछ व्यक्तिगत राय के रूप में कुछ जजों ने दिया है, जिसकी समाज में भ्रांतियाँ जा रही थी। हम सब लोग से भी कुछ लोग, समाज के लोग संपर्क कर रहे थे, वो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे कि सरकार का इस पर क्या संज्ञान है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लेकर आए मेमोरेंडम के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत आश्वासन के साथ है कि जो रिजर्वेशन की व्यवस्था जिस तरीके से SC/ST समुदाय में है, वो उसी तरीके से रहेगी। सरकार पूरे वर्ग के साथ खड़ी है। जजों की इस व्यक्तिगत राय का सरकार के पास में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और सरकार हर तरीके से अपने वर्गों के साथ में खड़ी है SC/ST। हम लोग कई तरह की भ्रांतियां 24 के इलेक्शन में भी फैलाई गई थी, क्या ये उसी को देख करके आप चाह रहे हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए ताकि कोई भ्रांतियां? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर 2024 के चुनाव में SC और ST वर्ग को भ्रमित करने का काम किया, लोग भ्रमित हुए, तो अभी भी लोगों में विपक्ष के लोग भ्रांतियाँ फैलाने का काम कर रहे थे इस जजों की राय को लेके। तो हमारे पास भी लोग जानकारी के लिए आते थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से इसीलिए समय लेकर इसको जानकारी में लाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने उसमें किया, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को सुन के सभी को आश्वासन के साथ में कि सरकार जिस तरीके से व्यवस्था पुरानी है उसी तरीके से व्यवस्था रहेगी। इस राय से कोई भी सरकार का लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो अस। पायल मेहता फॉर CNN News 18।